Assalamu alaikum, adab, namaskar, and a very good morning to all of you. Our chief guest, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, and Chancellor, University of Kashmir, Shri Manoj Sinha ji has arrived. We welcome you, sir. I now request all the dignitaries and the audience to rise for the national anthem. The national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Kindly take your seats. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I am Mariam, Assistant Professor in the Department of Economics, University of Kashmir. It is an honor and privilege for us to welcome you all to the inaugural function of the 4th Annual Conference of the Indian Economics and Allied Sciences Association 2023. The theme of this year's conference is India 2.0, Vision for India in 2047. Keeping with our traditions, may I now request the Honorable Chief Guest, Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir, and the Honorable Chancellor, University of Kashmir, to kindle the lamp and burn its band. I request all the dignitaries on the dais to join our Chief Guest. This calls for a round of applause from our audience. And hence marks the formal commencement of our conference. I stand privileged and honored to welcome Your Excellency, the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, and the Chief Guest of the inaugural function of the 4th National Conference of the Indian Economics and Allied Sciences Association, Shri Manoj Sinha ji. A highly trained civil engineer from the IIT Banaras Hindu University, Varanasi. Your Excellency dedicated yourself to the service of the nation at an early age. 3 times Member of Parliament, Minister of State for Railways, and Union Minister of State, Ministry of Communication with Independent Church. You have been rendering unrelenting services to the nation in different capacities. As a member of the General Council,
School of Planning, member of Committee on Energy and Committee on Government Assurances, you left indelible footprints with your work and contributions. Your Excellency, in keeping with your vision that National Education Policy 2020 offers, I quote, the key to unlock the vast potential of basic knowledge, applied skills, critical thinking, collaboration, leadership, creativity, innovation, lifelong learning, and career skills like flexibility, adaptability, as well as social and cultural skills, I unquote. This conference has devoted one session to discuss National Education Policy 2020, Global Approach to Higher Education in India. Your Excellency, as the Chancellor of Universities of Jammu and Kashmir, you have dwelt upon the potential power of education with your thinking that, I quote, education awakens the mind. It offers ability to question the status quo, and the questions sow the seeds of growth by empowering the young generation. Your Excellency, your words will definitely inspire the young generation of students. Your Excellency, you have been emphasizing development of education, health, women development, and in fact, the all-round development and prosperity to make Jammu and Kashmir a Viksit Jammu and Kashmir. This conference has dedicated one session to discuss social sector, including education, health, and one more session for discussing the socio-economic development of Jammu and Kashmir. Your Excellency, your thoughts and works reflect your commitment to the development of Jammu and Kashmir. Your thoughts and works will influence the contemporary and the future generations. Your Excellency, we feel honored with your noble presence in the inaugural function of the association. We remain indebted to you, Your Excellency, for gracing the conference and encouraging us. Thank you, Your Excellency, for your presence. Over the years, Indian Economics and Allied Sciences Association has contributed to improve understanding of development process of our country and economic policies, and enabled investors as well as policymakers to appreciate the potential of opportunities in various regions. I am truly delighted that the 4th annual conference over the next 3 days, will discuss 3 important themes: India's development strategy of Atmanirbhar Bharat, development issues in UT of J&K and Ladakh, and development issues of tribal population in India. Friends, despite uncertainties across the globe and profound impact of geopolitical events on the world economy, we have successfully defied the global slowdown. Under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the government policies, his determination to make India self-reliant and globally competitive, sectoral policies and programs for holistic development has put the economy on a sustainable path of high growth. It is good to remind ourselves that once upon a time, India was called Sone ki Chidiya, and we represented 25% of the world's total industrial output. But beyond nostalgia, we must actively contribute to the efforts of Honorable Prime Minister, who is bringing back the golden era and shaping India's economic trajectory. Today, we are the world's 5th largest economy. We are the most favored destination for trade and investment, and as revealed by the major economic think tanks of the world, we continue to be fastest growing economy in the world. And most importantly,
fruits of our growth are percolating to the grassroots. I know a lot of research has been done on Honorable Prime Minister's economic policies besides analysis of his vision to make India a $5 trillion economy by 24-25. His policies could be explained in 3 words: inclusive, progressive, and sustainable. From GST, Atmanirbhar Bharat campaign, infrastructure development, jammed to plethora of social schemes to uplift marginalized section of society, he has ensured accelerated economic growth, ease of doing business for global companies, and equity and opportunity for all the citizens. It was also reflected in his Independence Day address this year, when he laid a blueprint before us to build Viksit Bharat by 2047. And in September this year, during G20 summit in New Delhi, Honorable Prime Minister gave the world a new vision of human-centric approach instead of GDP-centric approach. I strongly believe our country is full of optimism, boundless energy, and ambition, and expected to contribute 15% of global growth in the current financial year. We are moving closer to our goal of making this truly the India's century, and I am confident our economic resurgence will be the key driver of global growth. The Economist magazine in the latest issue has written about India's wealth distribution, highlighting that the demography and geography of Indian wealth is broadening, and the money is product of real economy rather than of financial engineering. मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष में वो क्षमता आई है, वो सामर्थ्य आया है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी विकास के डेवलपमेंट के लाभों को साझा कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत, सच है कि ये पहला देश है, लेकिन उस मिशन से जुड़े हुए डेटा हम तिजोरी में ताला बंद करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके। हमारा इकोनॉमिक विजन नैरो नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की मजबूत नींव पर खड़ा है। कौटिल्य के 6 मूलभूत आदर्श समन्वयम, समछद्म, समाधृतम, समानियाकूति, प्रज्ञानार्थम, अपराविर्णु वयम, आज भी हमारा देश मार्गदर्शन कर रहा है। ये सूत्र हमारा कि विकास एक तरफा न हो, बल्कि हमारा सतत विकास इंडस्ट्री, बिजनेस और नागरिकों के लिए समान अवसर का सृजन करे, इसकी चर्चा महाभारत काल में, महाभारत में भी हुई थी। यथा देशांग यथा कलंग, यथा बुद्धिम यथा बलम, अनुशिष्य प्रज्ञा राजधर्म, अथर्ते तत्रिते रतः। हर एक प्रयास होना चाहिए कि विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं की समान पहुंच सभी नागरिकों तक हो, वंचित वर्ग का विशेष रूप से कल्याण हो, राज्य के पास नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी ताकत हो, और अच्छे स्तर का बुनियादी ढांचा भी हो। मैं समझता हूं कि जो भी इस बात पर विचार करेगा, पिछले 9 वर्षों में हर एक राज्य, हर एक यूटी में समाज के सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के विकास की व्यापक और समग्र योजनाएं पहुंचाने की कोशिश हुई है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारतीय राजनीति की केवल शब्दावली नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया है, और 9 वर्षों से इस देश में विकासवाद की राजनीति की एक नई परिभाषा देश के नागरिकों ने देखी है। कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर एक नई क्रांति को जन्म दिया है, और गरीब से गरीब व्यक्ति पूरे सम्मान, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा पाकर अपनी नई आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में आज जुटा हुआ है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 12 करोड़ परिवारों तक नल से जल, 3 करोड़ से अधिक आवासहीन नागरिकों
को आवास, 30 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवरेज, 3 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार बिजली, लगभग 40 करोड़ नागरिकों का मुफ्त इलाज, 11 करोड़ एलपीजी सिलेंडर, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट, 49 करोड़ जनधन अकाउंट और अब तक 25 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अध्ययन में मैं समझता हूं कि आप सबके लिए या शोधार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक नया आयाम जोड़ दिया है। आप लोगों के प्रोफेशनल समुदाय से जुड़े ब्रिटिश अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न का कुछ दिन पहले एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास की एक पूरी नई कहानी और इबारत लेकर आए और संपूर्ण विश्व के लिए उनकी स्पष्ट नीति और प्रतिबद्धता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, सन 1936 में 1936 में प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्ज ने विश्व की बदहाल अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अपनी इकोनॉमिक थियरी में 3 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन का जिक्र किया था। पहला, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा मूवमेंट ऑफ मनी और तीसरा प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। केंज का कहना था कि इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का स्पष्ट उद्देश्य और व्यापक इंटरप्राइजेस शुरू करने की क्षमता यह बहुत आवश्यक है। अगर देखा जाए तो यह थ्योरी 8 दशक से ज्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन मैं जब विचार करता हूं तो भारत ने पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है, उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि बुनियादी ढांचों में स्पष्ट सोच के साथ निवेश, बढ़े हुए खर्च ने उन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहयोग किया है। और आज ये बात कहने में, मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों से ज्यादा समय में हूं और मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, पता नहीं किस कारण से, खासतौर से जो हमारे बॉर्डर के राज्य थे, सीमाओं के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शायद इतना कभी नहीं हुआ था पिछले 9-10 वर्षों में जो इस देश में हुआ है। अगर पहले शायद हमने ध्यान दिया होता तो जो आज स्थिति बनी है, अभी हमें 5 साल 7 साल इंतजार करना पड़ेगा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सीमाओं के पास बनाने में, शायद ये काम हमने पहले समाप्त कर लिया होता। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट सोच दी है। 140 करोड़ नागरिक आज जानते हैं कि वो कहां खड़े हैं, उनका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है। 9 वर्षों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, रोड, ब्रिजेज, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक माइलस्टोन देश ने अर्जित किए हैं और विस्तृत व्यापक गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा है। आने वाले भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बने, इसके प्रयास हो रहे हैं, इसे और तेज करने होंगे। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी आने वाले भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेगी तथा एमएसएमई उद्योगों में भी इसके माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। जम्मू कश्मीर समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभाव को देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अभी चंद क्षणों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 5G लैब, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में और दूसरी IIT जम्मू में शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बात करना मैं आवश्यक समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक कहानी मुझे ध्यान में आती है। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले 19वीं शताब्दी के एक मशहूर स्वीडिश लेखक अगस्त स्ट्रीनबर्ग ने अपनी पुस्तक सन ऑफ ए सर्वेंट में लिखा है कि एक नौजवान किसी गांव में जाता है
वहाँ लोगों के हालात देखकर उसे एक आइडिया सूझता है। वो अपने दोस्तों वगैरह से कुछ पैसे उधार लेता है, गांव वालों को जाकर फूस, आप समझते होंगे, कि टोपी बनाने के लिए सबको राजी करता है। उसके मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दिलाता है। धीरे धीरे बेहतर डिजाइन, बेहतर प्रोडक्शन, मार्केटिंग लिंकेज के चलते कारोबार बढ़ने लगता है। गांव में समृद्धि आने लगती है, नए स्कूल खुलने लगते हैं, लोगों के घरों के भीतर और बाहर परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तभी एक दिन एक व्यक्ति उस गांव में आता है और गांव वालों से कहता है कि देखो, ये नौजवान तुमसे फूस की टोपी बनवाकर खुद अमीर हो गया है। स्ट्रीनबर्ग ने लिखा है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति यह भूल गया था कि गांव में सैकड़ों सालों से सिर्फ फूस ही पैदा होता था। वह रिसोर्स तो पहले से मौजूद था। नई आइडिया, नया उद्देश्य, नया इंटरवेंशन आया और उससे गांव में समृद्धि आई। जम्मू कश्मीर के हालात भी उसी तरह से प्रारंभ हुए और मैं आज कहना चाहता हूं कि यहाँ विकास, समृद्धि या जम्मू कश्मीर के लिए भी, देश और दुनिया के किसी इलाके के लिए भी आवश्यक है कि जब तक शांति नहीं होगी, विकास और समृद्धि नहीं आ सकती। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी हद तक शांति स्थापित करने में हम सबको सफलता मिली है। अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। हमारे पड़ोसी देश या आतंकवादी संगठनों के इशारे पर कभी 125-150 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा करता था, वो भी अब इतिहास की बात हो गई। अब यहाँ किसी डिक्टेट के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर का नागरिक जीने के लिए स्वतंत्र है। ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है पिछले 3-4 वर्षों की। कुछ लोगों ने संसाधनों पर अपना वर्चस्व इकट्ठा कर लिया था। एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई थी जिससे जम्मू कश्मीर को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। आज यहाँ पोटेंशियल बहुत है, अभी भी अनटैप्ड है और मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में ईमानदार कोशिश हो रही है। मैं 4-5 सेक्टर का जिक्र करूंगा और संक्षेप में जिक्र करूंगा। रश्मि सिंह यहाँ बैठी हैं, विस्तार से बताएंगी। कोविड के दौरान भी हमारी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो पॉजिटिव थी, देश के कम राज्यों में थी। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज से हमारा जीएसटी कलेक्शन कहीं बेहतर है, काफी बेहतर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, इसकी कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, मैं ये मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। चाहे कनेक्टिविटी रोड की हो, रेल की हो, एयर की हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़े, इसकी भी कोशिश की गई है। और मुझे याद है जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 10 घंटे से ज़्यादा लगता था। अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं और अगले साल 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। कश्मीर कन्याकुमारी से इसी मार्च महीने में रेलवे से जुड़ जाएगा। अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं तो 2020 में 18 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर आती थी और 18 जाती थी। अभी 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन श्रीनगर एयरपोर्ट से हो रहा है। जम्मू की बात करूं तो कुल 6 फ्लाइट, 3 आती थी, 3 जाती थी। अभी 44 फ्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई थी, गो फर्स्ट के बंद हो जाने से वो बंद हो गई है। कोशिश हो रही कोई दूसरी एयरलाइन जल्दी से जल्दी इसको शुरू करे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है तो 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर 3रे नंबर पर है देश में, और उत्तर प्रदेश से केवल 1 किलोमीटर सड़क हमने कम बनाई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। इस आंकड़े को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑनलाइन सर्विसेज में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। 1050 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है और ऑटो एस्केलेशन मोड में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सारी सर्विसेज हम लोगों ने कर दी है।
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो समय सीमा है उसके भीतर अगर सर्विस नहीं मिलती है एक आम नागरिक को तो फाइनेंशियल पेनाल्टी उसी दिन लग जाती है। 782 लोगों पर यह लग चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूं, ट्रांसपेरेंसी का जहां तक सवाल है तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि इस तरह का सिस्टम बनाने में हम सबको सफलता मिली है कि किसी देश के किसी राज्य से हम कम नहीं हैं, बेहतर ही होंगे, ये बात मैं जरूर जिम्मेदारी से कह सकता हूं। एनईपी का हमारे वाइस चांसलर साहिबा ने अभी आपको बताया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा किया है। और नॉलेज ऑन व्हील्स और डिजाइन योर डिग्री को यूजीसी ने बहुत सराहा है और मुझे लगता है कि शायद मैं जहां तक सोच सकता हूं आने वाले दिनों में देश के बाकी विश्वविद्यालय भी इसे निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 5-6 सेक्टर हैं जिनमें इंटरवेंशन ठीक से हो, इसकी कोशिश हो रही है। टूरिज्म, पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए थे। इस साल सितंबर तक 1,70,00,000 लोग आ चुके हैं। यह आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, देश के माने जाने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के हमारी जो दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर और एलाइड लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी ऑफिसर्स ने मिलकर के पिछले साल ये पॉलिसी बनाई थी। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की जीडीपी में है 5 साल बाद वो निश्चित रूप से न्यूनतम 2.5 गुना वृद्धि होगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जो 29 प्रोजेक्ट उसमें चिन्हित किए गए हैं वो साइलोज में नहीं, जो हमारी कमी थी जैसे फॉडर डेफिसिट थी उसे हम कैसे पूरा करेंगे, मिल्क डेफिसिट से अब मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। एक इंटरवेंशन की मैं चर्चा करूंगा केवल, क्योंकि समय नहीं है कि मैं हर विषय पर। कश्मीर में सामान्य रूप से एक ही क्रॉप होती थी, हार्टिकल्चर के अलावा पैडी पर ही यहाँ के किसान ज्यादातर फोकस करते थे। पिछले साल से रबी की फसल अच्छी मात्रा में होने लगी है। आज से अगर 5-6 महीने पहले कोई कश्मीर आया होगा, वैली को जिसने देखा होगा, तो यहाँ अखबारों ने खबर लिखी कि एक येलो रिवॉल्यूशन आ गया है कश्मीर में। मस्टर्ड की भारी मात्रा में फसल दिखाई पड़ रही थी, खूबसूरत भी दिख रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि ये सरसों की पैदावार से लाभ क्या होगा, खासतौर से मस्टर्ड से। तो एक सामान्य आदमी यही सोचेगा कि खाने के लिए तेल, एडिबल ऑयल मिल जाएगा। लेकिन इस एक इंटरवेंशन से जम्मू कश्मीर में 3 लाभ हो रहे हैं। एक तो हमें तेल मिलेगा ही, दूसरा जो ऑयल के हिंदी में खली हम लोग कहते हैं उससे फॉडर डेफिसिट की कमी होगी, और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, 1 महीना 35 दिन पहले मधुमक्खियां आ गई हैं, जिससे हनी और बी कीपिंग करने वाले हमारे फार्मर्स को इस साल बड़ी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से जो 29 प्रोजेक्ट हमारे विशेषज्ञों ने बनाई है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इंडस्ट्री मोटे तौर पर आज़ादी से लेकर 2021 तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ 14-15 हज़ार करोड़ का था। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है उसमें जो इंसेंटिव है, मैं देश भर से आए हुए लोगों के सामने बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है। जब पॉलिसी हम लोग फ्रेम कर रहे थे, स्टेक होल्डर से चर्चा कर रहे थे, ये बात ध्यान में थी कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर के निवेश करने वाले के लिए कुछ ऐसी सुविधा चाहिए। तो 80,000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज ग्राउंड पर लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के काम हमारे चल रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में बाकी भी जमीन पर उतार दिए जाएंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। हेल्थ पैरामीटर्स को अगर आप देखेंगे तो जिस भी पैरामीटर में आप देखेंगे वी आर मच अहेड ऑफ नेशनल एवरेज। और जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, हर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण दिया हुआ है।
ये जो हमारी, मैं मानता हूं कि प्रशासन और सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि समाज के जो कमजोर और वंचित लोग हैं उनका ध्यान रखें। और इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अच्छी पहल की है। ऐसे लोग जो लैंडलेस थे, जिनके पास घर नहीं था, उन्हें सरकारी जमीन देकर के उनका घर बनाना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, देश में बहुत पहले हो गया था, पूरी तरह से कम्युनिटी राइट्स दे दिए गए हैं। इंडिविजुअल राइट्स भी अधिकांश लोगों को जो जेन्युइन है वो दिए जा चुके हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में भी अच्छा काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। तो मोटे तौर पर आज मैं देख सकता हूं कि जम्मू कश्मीर एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी विकसित भारत के लक्ष्य में बाकी राज्यों से कम योगदान नहीं करेगा। गवर्नेंस 2047 पर सीरियस चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है। 3-4 बार हमारे लोग बैठ चुके हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। 2047 एजुकेशन 2047 क्या होगा, इस पर भी हमारे वाइस चांसलर्स, हमारे एकेडमिया से जुड़े हुए लोग बेहतर ढंग से इसकी योजना बना रहे हैं। और यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर प्रशासन का रहा है। और मैं कह सकता हूं कि एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम करते हैं यहाँ पर, उसमें एक प्रमुख लक्ष्य होता है कि जब हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक पंचायत को 1 साल तक देखते हैं तो बैक टू विलेज कार्यक्रम में हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना जो खुद इंटरप्रेन्योर बन सकता है और उसे फाइनेंशियल मदद पहुंचाना, ये प्रशासन जिम्मा लेता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज से 6 महीने पहले जब बैक टू विलेज 4 किया था हमने, तो एक दिन में हमारी 4250 पंचायतें हैं, एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए बैंकों से आर्थिक सहायता मुद्रा के तौर पर दिलाने में हमें सफलता मिली थी। मोटे तौर पर आज 85,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं और 7 लाख के आसपास हमारी बहनें उससे जुड़ी हैं। इस बार इसे हम 1 लाख करना चाहते हैं। उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में महिलाओं का या बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और ये 2 हमारी प्रायोरिटी एरिया है। हर पंचायत में यूथ क्लब बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स, आप जहां जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि वहां आपको हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड मिलेगा। देश के किसी विकसित राज्य से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर में है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इसमें हमारी पूरी मदद की है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया है और मैं इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का स्वागत भी करता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण जो एक नई व्यवस्था यहाँ पैदा हुई है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों, जनसामान्य एक बेहतर जीवन जी सके, क्वालिटी लिविंग का मौका मिले। हमारा लक्ष्य है कि ह्यूमन तथा फिजिकल रिसोर्स दोनों का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। एक ही विजन और एक ही मिशन है कि हर एक संस्था विकास उन्मुख होकर जम्मू कश्मीर के प्रगति में लगे और मुझे खुशी है कि इसमें यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग है। मैं आश्वस्त हूँ कि जम्मू कश्मीर एक नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के संकल्प में निश्चित रूप से योगदान देगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और 3 दिन में जो इस मंथन से अमृत निकलेगा उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिले, ये हमारी वाइस चांसलर साहिबा या हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं ये यहाँ से अमृत लेकर जाएंगे तो उसको कैसे हम जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, ये हम जरूर कोशिश करेंगे। मैं बाहर से आए अतिथियों का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। We talk about economics, somebody talks about history, somebody talks about political science, but there is no convergence between the subjects. Can we grow without convergence? No, I don't think it is possible. Convergence is required between developed and underdeveloped countries. Convergence is needed between the rural sector and the urban sector. Then why not convergence is done among the subjects? Why are we diverting ourselves from sciences? We talk about art, social sciences, and then we talk about medical sciences. And that was the beginning point. We started with this conference, this association, and I brought all the platforms together under one heading, and that was known as Indian Economics and Allied Sciences Association. It though started with only 7 members, but today it stands strong with 490 members coming across all over the countries, covering all states of the countries and union territories of the country, covering all subjects. Even the members from IIT have joined us who used to say we are technocrats, we don't believe in social sciences. They are now part of us. The civil servants, the IS officers, the IPS officers, who are the administrators, and I think they are the great implementers at the grassroots level of all Government of India programs, the central sponsored scheme, where maximum convergence takes place, where they use the tools of politics, they use the tools of economics, they use the tools of social structure that prevails at the grassroots level. Even when you go to the extreme northeast to the states of Manipur, you find there is a village chief system where the transfer of rights of land passes over to the village chief, not to any individual. And I think through them, I learned a lot when I interacted with them, and they gave me the formation of this association into a multidisciplinary association based, targeted to develop research at the grassroots level involving the youth of the country. We want to target the youth. We don't want to target the people who have already grown up. We want the support of the grown up to assist the youth to adopt proper research methodologies in research so that they grow well. The second ethos of our association is don't discard, but encourage. Normally when people write research papers, especially the young scholars who have just done masters, when they send a research paper at the higher level, the peer review committee rejects that paper. We don't reject the paper, sir. You'll be surprised, sir. We ask them to modify the paper. We send the paper back to them with guidelines, modify your paper like this. You are lacking in these areas. If you develop these areas, your paper will be published in a reputed journal. And they do it, they learn it, and that is the plus point of our association to encourage the youth who are in front of me. This association belongs to you more than to us senior people here. We are your guide. We are with you. We will stand with you. The third ethos, sir. Normally in a conference people come, the scholars come, they come by one flight, they go by other flight. I have made a point, no scholar will leave the conference for 3 days. They will be available in the hall, interacting with this youth so that they can at least have a photograph of them, they can interact with them, they can put their problems to them, they can ask new avenues of research to them, ask new topics on which they can do research. And that is the most stronger point of our association, sir, and that is why we are successful today. And one day, we will be the people who will be helping you to form the policies of the country in the right direction, assisting you from every nick and corner of the country,
whether it be the rural areas, the suburban areas, or the urban areas, sir. Now coming to the themes of the conference. So we chose certain themes because we have a vision, India 2.0 vision of India for 2047. We are targeting different sectors, whether it is social sector, the infrastructure development sector, the skill development or digitalization, and finally talking about Atmanirbhar Bharat, that is becoming self-sufficient and self-reliant in every aspect of life, whether it be technology, whether it be space sciences, whether it be social sciences. We want to be the leader in the world so that everybody starts following us. One of these special themes, because I have a less time, I'll only try to conclude. We had a small theme which was development issues of J&K, which we normally have in every state wherever we go. So we are trying to cover all the aspects of J&K economy. And to my surprise, sir, I'm wanting to highlight certain aspects. I've been to J&K. I have monitored NREGA scheme in this state. And that was way back, around 7-8 years back. Today, I find a different J&K. A J&K on the path of development and growth. I met the people. The feeling of the people was positive. They want development. They want to grow. They want to be part of the development process. I saw that change in this during 8 years of period, which I saw between two different periods. The infrastructure has grown. The industries have grown. The people's approach has become more open-minded, development-oriented. They want to mix with the country. They want to be the part of the country, aspiring higher levels of growth is in field of education, in field of economics, in field of social interaction, in the field of tourism. And I'm sure, sir, under your guidance, this all will be achieved in a very short span of time. You have transformed the state of J&K, and I wish this transformation will encourage J&K to grow. Indeed, a very joyful occasion for University of Kashmir. Again, we are honored to have our chief guest, Shri Manoj Sinha ji, Chancellor, University of Kashmir, with us. His vision and his implementation for new education policy for the information of the audience from other parts of the India has been premier in the whole country, and you'll be glad to know that University of Kashmir was one of the first in the country to implement new education policy in our affiliated colleges. And we are almost in the 3rd semester now, and other innovative degrees are also on way. For example, Design Your Degree College on Wheels. So this is the vision of our Honorable Chancellor, how much interest he gives to the higher education, and academics and higher education is his importance, and being here with us is one of the example in order to join this conference, which is the 4th annual conference of Indian Economics and Allied Science, his association. And of course, when we see India has come a long way since independence in 1947 and has and becoming a republic in 1950. In 2047, it will have completed 100 years as a republic, and it's executing to think about what the country might look like then is one of the deliberations which will be discussed in this particular conference. As a nation, we have made significant progress over the past few decades. It is easy to imagine that in the next 25 years, we are going to make India more powerful globally. Indeed, India is envisioned as a global leader in 2047 in innovation, technology, renewable energy, advanced transplantation, education hub, accessible healthcare, economy, and international relations, etc.
The Azadi Ka Amrit Mahotsav is an embodiment of all that is progressive about India's socio-cultural, political, and economic identity. It is also an initiative to celebrate and commemorate 75 years of progressive independent India and the glorious history of its people, culture, and achievements. Moreover, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package involves promoting local manufacturing. The government facilitated structural reforms such as redefinition of MSMEs, commercialization of the mineral sector, agriculture, and labor reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration card initiative, and production-linked incentive schemes. Towards this direction, the Department of Economics, University of Kashmir, has provided platform of this 3-day conference to the academia, researchers, practitioners, experts from multidisciplinary interests for scholarly discussion and meaningful discourses on the various issues of contemporary importance toward the achievement of Vision 2.0, where the eloquence and intention behind the novel vision India 2.0 are certainly laudable, but the need of hour is to have a critical and comprehensive analysis of policy measures that have been taken and would be taken so that its goals and desired targets are fulfilled without fail, for which this platform would be the best one. With this viewpoint, the themes and sub-themes are accordingly framed. Thank you for gathering here today to contemplate the future, a future that we hope to witness in 2047. The deliberations for Vision of India in 2047, a vision that is built on the foundation of progress, unity, and innovation. In 2047, India that has transcended the boundaries of mere development and has emerged as a global leader. The journey to this destination is marked by several key points. First and foremost, we see an India that is inclusive and egalitarian, a society where every citizen, regardless of their background, enjoys equal opportunities and access to essential resources. We have eradicated poverty, provided quality education and health care for all, and made sure that no one is left behind. In the realm of technology, we envision India as a hub of innovation and scientific advancement. Our country is a pioneer in cutting-edge technologies, be it artificial intelligence, renewable energy, space exploration, or biotechnology. Our scientists and engineers are renowned worldwide for their contributions to the betterment of humanity. Economic prosperity is another crucial pillar of our vision of India in 2047. We have a thriving economy that has created millions of jobs, fostered entrepreneurship, and encouraged sustainable development. India's GDP has grown significantly, and we have managed to strike a balance between economic growth and environmental conservation. On the diplomatic front, India is a global peacemaker and collaborator. We have built strong, harmonious relationships with nations around the world, contributing to global peace, security, and sustainable development. We are active in addressing global challenges like climatic change, poverty, and health crisis. Culturally, India remains a melting pot of diversity where different traditions, languages, and customs are celebrated and respected. Our heritage is preserved, and our arts, literature, and cuisine continue to enchant the world. In this journey, we must also ensure environmental sustainability. India in 2047 is a nation that values and safeguards its natural resources. We have significantly reduced carbon emissions, adopted green technologies, and are leading the world in eco-friendly policies. Lastly, the government and governance
our vision of India in 2047 are transparent, accountable, responsive, and to the needs of the people. The rule of law is paramount, and corruption has no place in our society. In conclusion, our vision for India 2047 is one of a thriving, prosperous, and united nation. It's an India that is at the forefront of global progress, maintaining its rich cultural heritage while embracing innovation and inclusivity. Let us all work tirelessly to turn this vision into reality, for it is in our collective efforts that we can shape the future we desire. Thank you very much. Once again, welcome all, and thankful to our Honorable Chancellor for being with us. Thank you. I'm grateful to the Indian Economics and Allied Science Association for giving us an opportunity to host this conference at University of Kashmir. And I congratulate Department of Economics, all the faculty members and their head department, Professor Imtiaz Saab, for conduct of this conference at the University of Kashmir. I will not take much time, but I hope that the deliberation of 3 days deliberation beyond the Indian economy, you will deliberate on the issues which are confronted by the UT of J&K, particularly of the Valley of Kashmir. When we talk about our resource base in Valley of Kashmir, we are a rich resource unit of this UT of J&K, though it comprises only 13% of the land of whole erstwhile J&K state. 70% of it is occupied, is now with Ladakh, 17 is with the Jammu, and 13 is with the Kashmir. But still we have a strong resource base, whether in terms of it is horticulture and agriculture, or in terms of the water resources. And probably we are the highest in Asia vis-a-vis the existence of our glaciers in this part of the country. Then we have our own age-old artifacts, which are particularly the handicraft sector. We have a strong resource base in the textile material also, and also you will be, most probably you will be knowing that J&K is probably the highest consumption in terms of the meat because of our weather also, and we are the highest, because of that we have the highest, most probably the wool and the leather, which is existing here in the form of raw material that exists in the valley. But we definitely need to discuss and deliberate about it, how to channelize and how to convert this raw material into the other sectors of the economy. Hopefully we will discuss these all issues in these 3 days, excluding our religious tourism, excluding our normal tourism of J&K, particularly of UT of J&K. We at the University of Kashmir, you must be knowing that you have landed in a safe and sound university, which is beautiful, picture-wise, and we are NAC A grade plus university with a CGPA of 3.31, and this year we have been ranked on the 33rd number by the NRF ranking this year only, 2023. And under the leadership of our Honorable Vice Chancellor, we try to extend full support to each and every department for their research, academic and extension activities. And we at University of Kashmir, we are always there to extend full support to any organization, any agency which is working in the sector of academic research or the extension activities, and we will be extending our full support in future also to the Association of Indian Economics and Allied Science Association and any other association which is interested in supporting our university, particularly in the academics of the sector. With these words, I again congratulate the Department of Economics for holding this conference. It is a privilege for the postgraduate Department of Economics, University of Kashmir, to play the host for 4th annual conference of Indian Economics and Allied Sciences Association.
keeping the tradition of holding successfully high-end mega events like Indian Economic Conference in early 80s, 90th Annual Conference of Indian Economic Association in 2007, International Seminar on Regional Economic Integration among Southeast Asian countries in 2008, International Seminar on Impact of Peace, Conflict and Disturbances on Economic Development Processes in 2012, and many more national and regional seminars on various development issues of J&K economy. An exercise to envision 2047 is being undertaken by the Government of India under the rubric of Azadi Ka Amrit Mahotsav to meet the aspirations like attaining new heights of prosperity, making best facilities available both in the villages and in the cities, building world's most modern infrastructure, eliminating the unnecessary interferences in the lives of citizens, and many more. It has been rightly predicted that by 2047, India will be a global powerhouse with the size of economy around $35 trillion. India is well on the path to become one of the two largest economies in the world by 2047. The seeds we sow today will define the fruits reaped in future, definitely. To achieve the transformational objectives of Viksit Bharat, envisioned in 2047 vision document, the country must continue to focus on Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. It is in this regard that the focal theme for the 4th Annual Conference of Indian Economics and Allied Sciences Association, being organized by the Department of Economics, University of Kashmir, in collaboration with Global Economist Forum and Gujarat Economic Association, has been chosen as India 2.0 Vision for India in 2047. Under the focal theme, the sub-themes which will be discussed and deliberated upon during these 3 days are infrastructure development, digitalization, social sector reforms, Atmanirbhar Bharat, Swachh Bharat, Swasth Bharat, Ayushman Bharat, Arogya Bharat, environmental concerns, Skill India, India and global economies. In addition to the main focal theme, we have one special session on development issues in duties of J&K and Ladakh. Out of total 8 technical sessions, 2 technical sessions are fully devoted to J&K economy. Plus, there will be one full house panel discussion on development issues of J&K economy, while we have 5 panelists drawn from different areas related to J&K. Reflecting on this association, I ask myself, are there other bodies which look at associating scholars from diverse disciplines? Well, I tried to find out from my own sources and so on. In fact, the answer that I got is that there are not that many, if at all. This is therefore a very unique institution, Indian Economics and Allied Social Sciences Association. Very unique because all of us who have been students of economics, and there are, I think that's the majority, economics, when it was practiced by the very best of the economists. Here I talk about Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, John Maynard Keynes. These individuals did not look at the subject in a narrow confine of strict economic issues of demand, supply and so forth. Of course they did look at that. Alfred Marshall, another great name, he formalized all of this. But each of these individuals that I've
mention, and I'll mention one more, Joseph Schumpeter. For these individuals, social processes need to be understood in a holistic manner. It is not enough to only look at economics. Often it's more important to look at the sociology. When we look at inequality, we as strict economists will only look at inequality of income or wealth. But if you are a true student of inequality, you must look at social inequality and other forms of inequality as well, political inequality as well. This was well known to very many predecessors of ours, including Ambedkar, who had said that, each person has a vote, so that is a notion of equality. But in terms of the background, you can have a millionaire and you can have somebody on the streets, and there's no equality there. So this is something that we need to understand. You can have equality in some spheres and inequality elsewhere. So you need to look at all of these in a holistic manner. And therefore, the Indian Economic Association, along with other allied social sciences in particular, I feel is a great innovation, and my sort of kudos to the originators, people like Dr. Alok Kumar, Shri Rana ji, जो बैठे हुए हैं वो आगरा के हैं, and they thought of starting this institution. I hadn't thought about it when I became a part of it, but slowly the reflection gained in my mind that this is a wonderful body to be part of. I'll come quickly to the subject that we have. We've heard quite a bit, particularly from the chief guest of this morning, about the very many achievements of the government of Jammu and Kashmir as well as the government of India in the last decade or so. And I do not want to minimize that. So and these are all coming from official figures. Leadership at the country level has been provided by the Prime Minister. And we all acknowledge the very many strides that have been made. But we are also social scientists, and one of the things, I've been a teacher and professor all through, so we are not only here to look at the facts and be complacent about certain achievements. We need to be critical of what is happening. And that is also very important, because unless you are critical, self-critical, you will achieve nothing. You will simply gloat about your past performances. More than the fact that this has been emphasized in the national education policy, that multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity is a way forward in solving problems and challenges that we face in India, in Asia, and the world today. I also happen to be recently elected as a president of Association of Asian Social Science Research Councils, and an idea which has been repeated time and again, of course, considering the fact that Asia is increasingly becoming very, very important. The Asian tigers, of course, as you know, are rising economically. India, of course, is going quite ahead. We talked about it by 2047 will be a developed economy, but it's also a moment for a challenge for us, because in case we are not, then of course we lose the demographic dividend that we're going to have. We're going to be close to 345.5 million young skilled workforce in the country by 2035. So it's a great opportunity for us. In ICSSR, we are interested in interdisciplinary research, as I was saying. Even International Science Council, of course. International Science Council was earlier International Science Council, International Social Science Council, which of course merged recently in ICSSR, also part of it. Social impact of public policy initiatives is extremely important. Therefore, human sciences is a core part of social science research. For the development of any country, any society, research in social sciences is extremely important. It's important to assess the impact of public policy initiatives
policy formulations, whether they're reaching to the last person in the country, which is of course a responsibility of all social scientists. It's also equally important for senior social scientists to take along young social scientists, early career social scientists, early career social scientists who have more, let's say, possibilities of going to the field. There's nothing against being a social scientist, but working together. At ICSSR, we are thinking in those lines, unless and until the marginalized and the underprivileged communities develop, it's difficult to imagine a developed nation, a developed country. On behalf of the University of Kashmir and the Indian Economics and Allied Science Association, it's my privilege to propose the vote of thanks. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Lieutenant Governor of the UT of Jammu and Kashmir and the Chancellor of the University of Kashmir, Sri Manoj Sinha, for accepting our invitation to be the chief guest on this inaugural session of the conference. His august presence and kind observations have encouraged us to conduct this mega event to the best of our abilities. A special thanks to the University Administration, especially our worthy Vice Chancellor, Professor Dilrukh Khan, who has always been supportive of academic initiatives and has always encouraged us to strive for excellence. We are very honored and privileged to have with us distinguished guest of honor, Professor Dhananjay Singh, the Member Secretary of the Indian Council of the Social Science and Research. Thanks to all the advisory committee members, organizing committee members, and other constituted committee members, especially Professor Anisa Shafi, HOD Sociology and Dean Student Welfare. Words are not enough to appreciate the hard work they put in to smoothly conduct this conference and make it a pleasant experience for everyone. We are lucky to have dedicated and persistent student committees and volunteers who made an event of this scale possible. Months of hard work and labor have gone into conducting an event of this scale, and our students have been the backbone of our event. I would also like to thank the MMRC crew and the media for helping us immortalize this event by capturing memorable moments for us. Our special thanks to the Director of the Convocation Complex and his entire team for keeping all the necessary arrangements in place. At the same time, I would also like to thank the Chief Proctor, Dr. Imtiaz Ahmad Khan, and his office for on-time necessary assistance and help. I would like to take this opportunity to thank Professor Alok Kumar, the Secretary of the IESA, for the kind of cooperation and assistance he has rendered in making this event possible.